Good evening, all. Looks like wrongly scheduled the timings, right? Good evening, all. Just checking the schedule was wrongly planned. So part 2, part 3 is planned today. Yeah, just give me a second. गुड इवनिंग। चलो थोड़ा ये सेशन थोड़ा एक दिन आगे हो गया, तो ये आज 29 है, तो विल डू 29। कल सेशन नहीं लिया, राइट? तो आज करेंगे और यहाँ से हम एक दिन पोस्टपोन करेंगे उसको। अब चलते हैं हम पार्ट 2 का प्रैक्टिस। और लास्ट क्लास में हम कुछ प्रैक्टिस किया था क्वेश्चंस को, और कंटिन्यू कर लेते और इनको एनालाइज किया क्या आप लोग? व्हाट इज द आंसर? ए के अंदर गेट है और 5 लोकेशंस है और नल कैरेक्टर स्टोर होगा, क्यों ये स्ट्रिंग है, हमेशा एंड्स विद नल कैरेक्टर। और i इज इक्वल 0, j इज इक्वल 4 और इनिशियली i का वैल्यू क्या है? 0 है और j का वैल्यू क्या है? 4 है। तो एग्जीक्यूट हो गया, ये सारा एग्जीक्यूट हो गया। और i लेस दैन j बिल्कुल 0 लेस दैन 4। तो अब क्या है, इनकी स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ सेमीकोलन है, देख लेना इधर सेमीकोलन है, तो इसकी वजह से कोई ये प्रिंटफ फर का नहीं है, करेक्ट? तो ये फॉर लूप इस चेक करने के बाद सीधा एग्जीक्यूट होगा। और ये क्या है? a ऑफ i इज इक्वल a ऑफ j। दोनों पोस्ट है, पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाद में होगा। सबसे पहले क्या होगा इधर? a ऑफ i इज इक्वल a ऑफ j होगा। इसके बाद आपको क्या करना है? i प्लस प्लस करना है और j माइनस माइनस करना है। 3 स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है, ये दोनों बाद में एनी ऑर्डर कर सकते हैं आप। तो a ऑफ j जो है a ऑफ i में डालना है। तो देखो j के अंदर 4 है, तो ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4। तो ये ऑफ j, ये जो j है,
तो नल कैरेक्टर इधर डालना है, तो डाल दिया हम, ठीक है। और इसके बाद i इंक्रीमेंट होगा और j डिक्रीमेंट होगा, करेक्ट। और 1 लेस देन 3 ये भी सेटिस्फाई हुआ। अब दोबारा जाके a ऑफ 3 को हम a ऑफ 1 में डालना है, तो a ऑफ 3 को a ऑफ 1 में इधर डाल दिया, करेक्ट। देन i इंक्रीमेंट होगा और j डिक्रीमेंट होगा 2। अब 2 लेस देन 2 फेल होगा, तब क्या होगा, अभी बाहर आएगा printf, स्ट्रिंग प्रिंट होगा। शुरुआत में नल कैरेक्टर है, आपको पता है स्ट्रिंग हमेशा एंड्स विथ नल कैरेक्टर, तो फर्स्ट कैरेक्टर इज नल कैरेक्टर, सो इट प्रिंट्स नथिंग, है ना, बिल्कुल सही है, राइट। इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहा है, तो यू कैन प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस लाया, यू कैन डू इट। तो ए 2 डायमेंशन अरे, ये तो सी का अरे नहीं है बट द सिमिलर है, तो ए इज डेटा स्ट्रक्चर की क्वेश्चन है, तो ए का अरे 1 to 10 है, रोज एंड 1 to 15 कॉलम्स मान सकते हैं। और अज्यूमिंग दैट ईच इंटीजर टेक्स 1 मेमोरी लोकेशन, ये याद रखना 1 मेमोरी लोकेशन। द अरे इज स्टोर्ड इन रो मेजर ऑर्डर एंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे इज स्टोर्ड एट लोकेशन 100। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट ए ऑफ आई जे? तो i इज समथिंग, j इज समथिंग, यहाँ पे दिया नहीं है, तो डिपेंड्स ऑन i j आपको कैलकुलेट करना है। तो अब देख लेंगे, तो एक एरे है, इट इज a एंड स्टार्ट्स इंडेक्स विथ 1 तब तक 10 तक, और j ऑल्सो स्टार्ट्स विथ 1 तब तक 15 तक। अब ये चेक करना है आपको, ये पर्टिकुलर i है, ओनली ये पर्टिकुलर i है, और आपको j कैलकुलेट करना है, मान लो ये j है, इनकी एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो आप i लिया है तो i-1 भी रेफरेंस लेना, ताकि इजी होता है। j लिया है तो j-1 भी लेना रेफरेंस। अब देख लीजिए, आपको इनकी एड्रेस कैलकुलेट करना है, इनकी एड्रेस यू हैव टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ a ऑफ ij, ये है ना, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ a ऑफ ij? तो एड्रेस ऑफ a ऑफ ij इक्वल, आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट एड्रेस इज एट 100, ये जो फर्स्ट एलिमेंट जो है एट 100 पर है। अब इनकी रेफरेंस लेके हम इनको कैलकुलेट करना है। तो बिफोर दिस रो कितने रोस है? i-1 रोस, i-1 रोस। ईच रो में कितने एलिमेंट्स है? 15। तो 15 इंटू i-1, तो आपको होगा इधर 15 मल्टीप्लाई विथ i-1 होगा, प्लस इस रो में कितने एलिमेंट्स है? 1 to j-1 तक, यहां से यहां तक j-1 एलिमेंट्स है, और ईच एलिमेंट तो 1 मेमोरी लोकेशन है, तो साइज 1 आप ले सकते हो, j-1, और मल्टीप्लाई विथ 1, क्यों? 1 मेमोरी लोकेशन इट विल टेक, एवरी इंटीजर विल टेक 1 मेमोरी लोकेशन। तो आप देख लीजिए क्या होगा आंसर, 100 प्लस 15i माइनस 15 प्लस j-1, तो ये -16 है, 100 माइनस 16 कितना होगा? 84 होगा, 15i प्लस j 84 ये है, ठीक है। तो इनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 15i प्लस j, ये -15 -1 -16, 100 से -16 हटा दो तो 84 होगा। आंसर आया, ये इज द राइट आंसर, ठीक। और डेटा स्ट्रक्चर, ये सी का कॉन्सेप्ट यूज करके डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। ये रो मेजर ऑर्डर है, अगर ये कॉलम मेजर ऑर्डर दिया तो कॉन्सेप्ट अलग होगा, ठीक। अब चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एरे? ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है, तो यू माइट बी एनालाइज, राइट। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ हेटेरोजेनियस डेटा टाइप्स, आपको ट्रू फाइंड आउट करना है, बट ये ट्रू तो नहीं है। द डेटा इन एरे इज स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी अलोकेशंस, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस, ये वर्ड जरूरत नहीं है, कंटिग्यूअस मेमोरी में स्टोर होगा डेफिनेटली। array provides random access of data, yes you can access any element using the index, ये भी सही है। और array provides better cache locality which helps in performance improvement, तो ये है। आप देखो, दो एलिमेंट कंटिन्यूसली स्टोर होगा तो डेफिनेटली द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो है तो सही होगा। कैश में अगर आप 100 बाइट स्टोर किया तो जो साथ में है तो डेफिनेटली कैश में रहेगा, तो ये बेटर होगा आपके लिए परफॉर्मेंस इंप्रूव के लिए। तो बार बार आप
मेमोरी में जाने से अच्छा तो कुछ ऐसे साइज है, मान लो 100 बाइट्स, साथ में लाके आप जो मान लो 20 एलिमेंट्स रिफर कर रहा है 100 बाइट्स में, तो सारे 20 एलिमेंट्स के लिए आपको मेमोरी जाना जरूरत नहीं है, तो दैट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। ये भी सही है। तो 2, 3, 4, तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। बिल्कुल विपुल सॉल्व किया क्या सब कुछ? ग्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग और वैलिड डिक्लेरेशंस ऑफ एरे? तो ये हम क्लास में ऑलरेडी देखा है, ये सही डिक्लेरेशन है ना? क्या होगा? 4 एलिमेंट्स होगा और एक 0 में 1 4 स्टोर होगा, रिमेनिंग 0 स्टोर होगा फोर्सफुली। ये बिल्कुल सही है। ए ऑफ 6 में आप 6 एलिमेंट स्टोर कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। और 6 एलिमेंट्स में 4 एलिमेंट्स भी स्टोर कर रहा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ कोई साइज नहीं दिया, बट ये फिक्स होगा, एक ही एलिमेंट होगा इसके अंदर, उसमें 4 होगा, राइट? एक ही इंडेक्स है, 0 इंडेक्स होगा इधर, क्यों? अरे के अंदर ओनली 1 एलिमेंट इनिशियलाइज किया, तो बाय डिफॉल्ट द साइज ऑफ द अरे इज जस्ट ओनली 1 एलिमेंट। ठीक, ये भी सही है। 1 2 3 4 ऑल सही है। ठीक है, output of the following program assuming that size of integer is 2 bytes। क्या आंसर आया आपको? Let me share the link with the students. What is the answer? इस तरह क्वेश्चन भी सॉल्व किया है ना? अब ये कितना साइज है? 4, राइट? द 4 एलिमेंट्स ईच वन इज 2, तो सो दिस विल बी 8। तो ए का साइज क्या है? देयर आर 4 एलिमेंट्स एंड डेफिनेटली ईच वन इज 2 बाइट्स, तो साइज ऑफ ए क्या होगा? 8 बाइट्स। अब साइज ऑफ ए तो 8 है और साइज ऑफ इंट क्या है? 2 है। 8/2 क्या होगा? तो 4। तो डेफिनेटली द आंसर इज डी। बिल्कुल सही है। चलिए, एक ऐसे क्वेश्चन आया आपके सामने, देर इज अ फंक्शन कॉल, वहां पर a प्लस टू दिया, a इज द एरे एंड एड्रेस ऑफ a ऑफ 2 दिया, तो आपको पता होगा a प्लस 2 इज ऑल्सो सेम एज व्हाट? एड्रेस ऑफ a ऑफ 2। अगर ये पता है तो डायरेक्टली यू कैन आंसर दिस टू आर बेसिकली सेम, दे आर नॉट डिफरेंट। इफ दे आर सेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू, राइट? So both, you can use these 2 words, both, right? This talking about both same, but यहाँ पर फर्स्ट सेकंड दोनों अलग अलग है, यहाँ भी फर्स्ट सेकंड दोनों अलग अलग है, you can delete them simply। और ये क्या हो सकता है? both pass the function f the value at the index, ये वैल्यू पास नहीं हो गई, a of 2 अलग है। अगर आप ऐसे पास किया f of a of 2, then it will pass the value where you have the at index 2, बट यहां वैल्यू पास नहीं होगा, एड्रेस पास होगा। दिस रिफर्स एड्रेस, राइट?
both are same, and both pass to the function where the address of the subarray that starts at a of 2. Indirectly address of a of 2 दिया है, तो आप वहां से यूज कर सकते हैं आप जो भी चाहिए. तो दिस इज डेफिनेटली राइट. बिल्कुल डी सही है. डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा. So directly we can say that you know subarray you can say or address of, directly you can say address of address which starts at a of 2. That's obviously right. If it's starting at a of 2, that's called as basically a subarray. Or yeah, good question here. You can predict again similar question in the exam. Anybody solve this question? So those people who are requiring a lot of practice questions, and I said like we will be practicing a lot of questions in this series. So if you have already completed this topic, and these questions will help you to practice more. And anyhow, I'm sharing this PDF in Telegram group. You can download and you can practice later times also to have a revision. How many elements you have? 7 elements. Now this is a plus 0, right? Address. This is a plus 1. This is a plus 2. So you are sending the address of a of 2 basically. Address of a of 2. So you are passing address of a of 2. The capital A is going to be assuming from here. This is capital A. Now a of 0. For A, this is 0 index, right? This is a plus 0, a plus 1, a plus 2, a plus 3, a plus 4. And this will be a minus 1. This is a minus 2. And the question is very simple. What is a of 0 you have? A of 0 you have a 3. And what is at a of minus 1? It is 2. So 3 plus 2 is what? 5. So it's going to print 5. Very easy. Yeah, B is pretty right. Yeah, Pritam and Vipul. चलिए आगे चलते हैं. Predict the output of the following program. Go ahead. The X is created with only one element, which is 2, but remaining elements will be stored as 0. And you are accessing from 0 to 4. 0, 1, 2, 3, 4. And there is no semicolon, so definitely this belongs to for loop only. X of 0, 1, 2, 3, 4. What will it print? 2, 0, 0. Right. Again, your answer is B. Yeah, can someone find out what happens to this program? Or what happens to the arrays that you have seen X and Y? Look at what is happening. The X array has hello and Y has hi. And when you call modify X comma Y, you are sending the address of the first elements indirectly, right? Here XY is also referring the same memory, and X of 2. So can you modify that? 0, 1, 2. You are modifying this one. And here X of 3. So there is no Y, right? Oh, this one modified with the Y. So let me write here if you want it. X is an array which stores right. Y is the another array which stores hi. Now you are passing the address of the first element of X and Y to this X and Y, and there also X and Y is same. The same X and Y you can refer. This is 0, 1, 2. At this place
you are replacing with y, because y is a character, right? This is a character. Remember, it's not the array, it's a character. Here y is the array name, and this y is different from that y. That y is a variable name. Then x of 3, the x of 3 you are storing null character. So this is the 3, and here you are storing null character. So, and you are coming back, because this memory only getting updated. When you come back after calling the modify, when you print x, it prints 𝐻𝐸𝐬. That's it, because null character will stop that string. X will print 𝐻𝐸𝐬, comma, and the y address you pass it, that address of the first element you will pass, it will print HI. And that is also answer B. Oh, somebody said D? No. So this prints HEY, and this prints HI. In between, comma is there. Right? Why it is D? Not D, it's a B only. Okay. Go ahead. Now it's easy to calculate. We have done a lot of questions on this, right? Okay, no issues. Let us assume an array A which stores integers of size 4 byte. So integer का size कितना है? 4 byte. Stored in increasing address fashion that everybody knows in the array, right? Starting address is given 1000. What is the address where the value 40 gets stored? So you need to find the address of this one. And where the 10 is stored, that 1000. And each is 4 bytes, so this will be 1004. This will be 1008. This will be 1012. So it will be stored at 1012. So easy to calculate if you know the concept of the memory representation. Now the size of each element is given 3 bytes, and the starting address is 2000. You need to find element 60. So this element, and the first one is stored at 2000. Each one is 3 bytes, so just you need to do the plus 3. You get what? 2015. A similar question. So it improves your accuracy because you are doing the similar questions, and the idea is like whenever you are not able to solve, अगर कोई भी ऐसे concept है, अगर आप solve नहीं कर पा रहे हैं, then take a lot of examples on that concept and try to practice more. So you will get the approach easily. Similar question, we already did it. Integer size is 4 bytes, and now what is the size of X? Total you have 2, 3, 6 elements are there. Each one is 4 bytes, so X will have 6 4s are 24 bytes, and size of X is 24 bytes. So this is 24, and size of int is 4, and 24 by 4 is 6. So one answer is coming here, 6. So maybe this option or none of this, we'll check it. Size of X of 0. Now you are talking about element, not the whole array, right? X of 0, these are 4 bytes only. Element is also 4 bytes, and integer is also 4 bytes. 4 by 4 is 1. Oh, it's not matching now. Can you see that? And size of, oh, I'm very sorry. It's 2D, right? I'm completely wrong. This is, now you can see, this is size of element. That was not size of element. What is it? My mind went to 1D. This is size of a row. This is a row name, right? So it's a row name basically. It's a 2D, right? In 2D, this is called as the row name. And element name is X of 0 of 2. So it's going to be row size. What is the row size? Each row is having 3 elements, right? 1, 2, 3. And then another row is 4, 5, 6. And this is X of 0. This is X of 1. So this is a complete row size. X of 0 represent row size. How many elements are there?
3 elements, so 3 4s are 12. So this gives you 12. So understand here, the mistake that I did is, here you will have a 12 and this is a 4. 12 by 4 is 3, not a 1. Previously I did 1. That was considering element. This is element. Size of element is what? 4. So it should print 4. 6 3 4. Oh, we have an answer. Yeah, good. So here there are 3 things. X is different, x of 0 is different, x of 0 of 2 is different, right? The x refers array, so array size is what? The 24 bytes. And x of 0 refers a row, it refers one row size, that's 12 bytes. And x of 0 of 2 is refers one element, the one element is 4 bytes. So note that to solve it. Okay, if A is one dimensional array, A of I is evaluated as, which one you treat as A of I here? Can you say A plus I? A plus I refers address of A of I, right? It's not A of I. Star A refers A of 0, correct? And this one refers A of I, and this is right one. And what is this refers? This refers A of 0 plus I, and it's completely different from A of I. So C is the right answer. Move on to another question which is 2-dimensional, just to understand the representation. A of ij is evaluated as in which fashion in compiler, है ना? यहाँ पर ये होता है कंपाइलर को कैसे समझ में आता है A of ij. अगर आपको पता है A of ij, if you use the precedence table, so the slice will follow left right. So it's going to apply like this. First you are going to evaluate this, then you will evaluate this. So when you do that, you can see this simplification is star of A plus I, correct? Then of j, and something of j which is similar to the x, you can assume star, that's x, you are going to write star of A plus I. Close it properly. The star x plus j. This is how you can do the whole expression. So which one is going to match with that? This will refer A of I, and this whole thing will refer A of ij. Okay. So then what is this first one? Oh, this is a very simple, A plus I plus j. What is this? This refers A of 0 plus I plus j. And what is this C refers? This is A of, this refers A of I, right? A of I plus j. That is also different. See, if anybody joining rank booster batch, the completed subjects will be recorded, and those things which are not happened yet, you will be seeing the live only. Okay. Go ahead. Is it visible to everyone? Now you have the concept of the 2-dimensional array, and this is a pointer to array. Two concepts we are using here. Remember that? Is it visible properly to everyone? Yeah, it's visible. So we have two things to deal. One is x is a 2-dimensional array, and it right, you have given 3 elements, so it will take 3 elements in each row, so it automatically calculates there are 2 rows. So this will be calculated as the 2 by compiler. Understand? The x of 2. So x is a 2-dimensional array, will have 10, 20, 30. This is a 1 row, and other row is 40, 50, 60. This is 2-dimensional array, and
each row has 3 elements. Now what is y? Y is a pointer, means it stores address, but the address of the 3 elements whenever you store. So when you give an x, and remember this, if the compiler throws a warning or if it is not allowing, you need to do the typecasting. Remember that if it is not allowing, here is you should do the typecasting. So I'm assuming that it is allowing it, so I'm giving an address of the x of 0 indirectly, right? So address of x of 0, this is x of 0, I'm giving the row indirectly. Everybody knows x is equal to what? Address of x of 0. It means I'm giving the row, address of this row. So that's 3 elements obviously, right? So it should take that address. Okay, now the y is pointing to, it is address of x of 0. It should point to this row. Correct? So you have a clear declaration here. Y is a pointer, but which should point to 3 elements. Yes, array of 3 elements it's pointing. Now, what does this represent? Star y1. What does this represent? This represent y of 0 of 1. Because star y, when you evaluate, it is a y of 0, right? So y of 0 of 1. So here, y of, it just looks like 2-dimensional. The accessing also same way. You can see star y will give you access to inside, and in that you want this is 0. This is 0 index, this is a 1 index, this is 2 index. And you want to access the 1 element, so you will get a 20. So with this, you will see 20. What value you will see? We'll see here 20. This will give you 20. And what about this? It's 2, right? The 30. And first printf will give you 20, 30, and there is a possibility of A and B. And plus plus y. What is the meaning of plus plus y? Y is equal to y plus 1. And what is the y? Address of 3 elements array, 3 element array. Remember this? This address is stored here. And when you increment, it jumps to the next 3 elements. It jumps to next 3 elements. It goes here. So when you do plus 1, it goes to next 3 elements. Then right now, the y is pointing to the second row, and 1 will print now 50 and 2 will print 60. So now here it is 50 and 60. So 20, 30, 50, 60. That's a B. Right. Right. Thank you so much. Able to understand? So only the trick here is when you increment y, will it go to the next row or will it go to the next element? It is really important. It is not a normal pointer to go to the next element. If this is int star y, then definitely when you do y is equal to y plus, of course, forget about all this syntax. When you do plus plus y, it goes to the next element, right? If you are storing the 10 address here. But anyhow, that's we have not done. We have stored the complete row address rather than element address. Okay. Let's move on to the next question. So if anybody is not good at the increment, all this, can try this. Okay. And I hope I have again a lot of questions. You know, I have a very limited time today. Again, we'll practice here from here tomorrow, and from 24, this 24, 25 yesterday I have given. And apart from that, please practice the remaining questions we will do in the next class. And 26, we have a lot of questions to practice. And please go through this. There are many PYQs too. And let me know your answers in the comment if you have already solved it. Okay. So I brought some of the questions to do it. Okay, 34 and 35 questions we have total. And please solve them, and we'll meet in the next session again. And yeah, see you tomorrow. I have another session right now, so due to delay, not able to continue for a long time. See you tomorrow then. Thank you so much.